Are you able to see the screen? Yes. Perfect. All right. So starting with the basic, my company is called Yugen Infra. Yugen is a Japanese word. The reason we took that name is because it best symbolizes or its profound and enchanting beauty. And the reason we say it best demonstrates my company का जो ideology है is because मेरी कंपनी जीरो या मिनिमम इम्पैक्ट एनवायरनमेंट के साथ अपना डेवलपमेंट लेके आएगी। तो हम लोग जो भी काम करेंगे उसमें नेचर को मिनिमम इम्पैक्ट के साथ काम करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ अबाउट हु वी आर, सो हम लोग दो रियल एस्टेट के बड़ी कंपनीज थी गुड़गांव मार्केट में, विच इज कॉल्ड टाइम्स प्रो कंसल्टिंग एंड वीके डेवलपर। टाइम्स प्रो कंसल्टिंग 15+ ईयर पुरानी कंपनी है एंड वीके डेवलपर 25+ ईयर पुरानी कंपनी है। टाइम्स प्रो कंसल्टिंग को शीशराम सर ने एंड उनकी वाइफ मिस खुशबू जैन मैम ने स्टार्ट किया था, क्योंकि शीशराम सर हमेशा से एक डेवलपर बनना चाहते थे। तो 2023 में उनने टाइम्स प्रो कंसल्टिंग शट डाउन करी और यूजन पे काम करना शुरू किया। जब यूजन पे काम शुरू किया तो उनने अपने 3 दोस्तों को फोन लगाया, अमित ममगेन सर को, रोहताश तायल सर को एंड विजय कुमार अग्रवाल सर को। अमित सर शीशराम सर के तब के फ्रेंड है जब शीशराम सर और अमित सर ने अपना कॉलेज पास आउट किया था, एमबीए कंप्लीट किया। रोहताश सर और विजय सर वीके डेवलपर से आते हैं। वीके डेवलपर 25+ ईयर पुरानी कंपनी है जो गुड़गांव में एज अ कंस्ट्रक्शन पार्टनर काम किया है विद द लीडिंग डेवलपर। उसके अलावा अपने भी प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए। टॉकिंग अबाउट माय कंपनी, सो नए कंपनी है, सारे डायरेक्टर्स इकट्ठे मिले तो इन्होंने यूजन शुरू किया। जब यूजन शुरू किया तो एक नया कंपनी शुरू किया। नए कंपनी का अपना एक विजन होता है। हमारा बहुत सिंपल विजन है, इंटरनेशनल रियल एस्टेट को इंडियन मार्केट में डिलीवर करना है। कंपनी के आइडियोलॉजी मोटो को मेंटेन करते हुए मिनिमम और जीरो इम्पैक्ट एनवायरनमेंट। मिशन और भी सिंपल है, एक बहुत बड़ी कंपनी बनानी है। बड़ी कंपनी एक ही तरीके से बनती है कि मेरा क्लाइंट ग्रो करे, क्लाइंट का पैसा ग्रो करता है, उसका रिटर्न ग्रो करता है, वो मेरे चैनल को ग्रो कराएगा, चैनल ग्रो करेगा तो मैं ग्रो करूंगा। विद दिस आइडियोलॉजी वी मेड मिशन कि हम लोग एक ऐसा इकोसिस्टम बनाए जहां पे सब ग्रो करे और सबको रिटर्न्स एंड इनकम्स बेटर हो। तो इकोसिस्टम ऑफ ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी इज व्हाट आवर मिशन इज। पुटिंग अ फेस टू द कंपनी। देखिए ये सारे नाम और आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है, बट शक्ल की अगर बात करें हु आर वी, तो दिस इज मिस्टर शीशराम यादव सर, 20+ ईयर वर्क एक्सपीरियंस। स्टार्टेड विद बैंकिंग, हाउएवर मूव्ड इनटू रियल एस्टेट। 15 साल से रियल एस्टेट को रन किया है। डेवलप्ड हिमसेल्फ एज अ प्लैटिनम चैनल पार्टनर फॉर लीडिंग डेवलपर्स ऑफ दिल्ली एनसीआर। बट लाइक आई सेड, हमेशा से एक डेवलपर बनना चाहते थे। तो लास्ट ईयर अपनी कंपनी टाइम्स प्रो कंसल्टिंग को शट डाउन किया और यूजन को एस्टैब्लिश किया। ही इज द मैन बिहाइंड यूजन इंफ्रा, द ब्रेन्स बिहाइंड यूजन इंफ्रा। अगर बात करते हैं दैट्स मिस्टर रोहताश तायल सर। रोहताश सर की अगर मैं बात करता हूँ, रोहताश तायल सर इज फ्रॉम वीके डेवलपर। 25 साल पुरानी कंपनी, 25 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है। ही इज समवन हु लव्स to pick up large projects and execute those. That is Amit Mamgen. Amit Mamgen sir is a person with over 20 years work experience, 18+ years in banking. What does he get to the table for me? देखिए, अगर एक कंपनी की इकोनॉमी की बात की जाए तो द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंपनी is with the this thing, the accounting team, the funds, the finance team. And who better to manage the funds and finance for a company than a person जिसने 18+ साल से ज्यादा wealth management and cash flow management पे काम किया है. So that's what he gets to the table, and that is Mr. Vijay Kumar Agarwal. So Vijay sir के नाम पे VK Developer established हुआ था, तो he's worked from grassroots level all the way up. What does he get to the table today is a deep knowledge and understanding of the legal documents around land and real estate work. So these are the 4 directors that I have. They are all from northern India. But इनने करा क्या पहले? सारी बातें यही है, बट इनने किया क्या? तो ये मेरे डायरेक्टर्स का कुछ पास्ट है जो हम लोग डिस्कस करते हैं। वीके डेवलपर ने सोना में 11 एकड़ का डीडीएवाईजे प्रोजेक्ट डिलीवर किया है सोना ग्रीन्स के नाम से, और सोनीपत में ग्लोबल इंडस्ट्रियल टाउनशिप 100+ एकर्स की डिलीवर किया है एज ग्लोबल इंडस्ट्रियल टाउनशिप सोनीपत। ये दोनों प्रोजेक्ट्स कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से लेके डिलीवरी तक वो पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट टू डिलीवरी, ये पूरा वीके डेवलपर का इंडिविजुअल काम रहा है।
इंडिविजुअली इन लोगों ने डिलीवर किया है। टाइम्स फ्लो की अगर मैं बात करता हूँ तो टाइम्स फ्लो ने अपने टाइम में 5000 प्लस से ज्यादा यूनिट सेल करी हुई हैं। ओके, बट दिस इज ऑल पास्ट ऑफ माय कंपनी, ये हम लोगों ने पहले किया है, पीछे किया है, बट अब हम लोग क्या करना चाहते हैं। तो द फ्यूचर ऑफ माय कंपनी, दिस इज व्हाट माय फ्यूचर इज। आई एम स्टार्टिंग विद माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ये रन बैंड के पीछे छुप गया है। द फर्स्ट प्रोजेक्ट आई एम स्टार्टिंग विद इज गोइंग टू बी इन नॉर्थ ऑफ गोवा। 300 एकड़ की टाउनशिप लेके हम लोग आ रहे हैं, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 मिनट की दूरी पे। अगर मैं बात करता हूँ आफ्टर दैट, तो मेरे ऑलमोस्ट 8 प्रोजेक्ट्स गोवा में आएंगे। हम लोग गोवा में ऑलमोस्ट 10 से 12 साल रहने वाले हैं। वी आर गोइंग टू बी अ नेम टू बी रेकन्ड विद इन गोवा। बट वाई डिड वी चूज गोवा? ये सब अगर हम लोग बात करते हैं तो मेरे डायरेक्टर सारे नॉर्थ के रहे, डेवलपमेंट नॉर्थ का रहा, तो गोवा क्यों लिया? तो ये कुछ आर्टिकल्स आए हुए हैं गोवा के ऊपर इन द डिफरेंट न्यूज़पेपर्स वेयर इट टॉक्स अबाउट a sudden splurge, a sudden growth in the Goan real estate market. बट ये शुरू क्यों हुआ और ये आया कहाँ से? तो इसका शुरू होने का बहुत सिंपल रीजन है। गोवा इंडिया का एकमात्र ऐसा स्टेट है जो मरे से मरी हालत में आपको डबल डिजिट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता है। कैसे देता है? गोवा बीइंग अ टूरिस्ट हेवन, ग्लोबल टूरिज्म का पार्ट है। वर्ल्ड ओवर से आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता गोवा में होता क्या है। तो पीपल कम टू गोवा फॉर दैट रीजन। When they come to Goa, they pay for the experience they have. See, tourism is all about an experience. The better our experiences are, the better we pay for that. Goa is 12 months a year season today. पहले एक टाइम था जब गोवा में 4 से 6 महीने का सीजन होता था गोवा का। गोवा अपना 4-6 महीने में काम करता था, और उसके बाद इट यूज टू डाई आउट। बट आज की तारीख में गोवा में 12 महीने का सीजन चलता है, 12 मंथ्स ईयर सीजन है, विद एन एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ 70 to 75%। गोवा का सीजन चल रहा है। अगर हम बात करते हैं क्या गोवा वाज ओनली अबाउट मनी दैट वी लुक्ड एट? नो, गोवा वाज नॉट ओनली फॉर मनी वी वेंट देयर। गोवा इज आल्सो द स्टेट जिसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हैज गिवन नंबर 1 प्लेस फॉर लिविंग ड्यू टू द मल्टीकल्चरल मल्टी एथनिसिटी लाइफस्टाइल दैट हैज डेवलप्ड इन गोवा। आज गोवा एक वर्ल्ड ट्रैवल हो जाता है। आप अगर गोवा में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हैं, द मल्टी एथनिसिटी, द मल्टी कल्चरल लाइफस्टाइल दैट यू लिव इन गोवा gives you a comfortable and soft paced life. However, the big एकदम से ये जितनी भी बातें हैं, these are all that has been there with Goa from 1960s. तो आज क्या हुआ जो एकदम से सब गोवा को as a second home, as a vacation home लेने के लिए भागे? तो देखिए, गोवा का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो था ना सर, देखिए कोई भी अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, ही वांट्स टू नो कि उसका पैसा कैसे ग्रो कर रहा है, प्रोजेक्ट कैसे ग्रो कर रहा है, प्रोजेक्ट के आसपास क्या आ रहा है। एंड गोवा का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि गोवा का एक्सेसिबिलिटी बाय एयर वाज ओनली थ्रू डाबलिन एयरपोर्ट, एंड डाबलिन बीइंग अ नेवल एयरपोर्ट, इट वाज वेरी रिस्ट्रिक्टिव एयरपोर्ट। मॉर्निंग इवनिंग के सिवा फ्लाइट्स नहीं आती थी। जब नेवी का मन करे एयरपोर्ट को शट डाउन कर देता था, फ्लाइट सारी बंद हो जाती थी। सो विद ऑल ऑफ दोस थिंग्स हैपनिंग, गोवा में लोगों को पैसा लगाने में, बट विद द मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कमिंग इन, the first DGCA airport coming in, the landscape changed. गोवा का रियल एस्टेट लैंडस्केप चेंज। वो जो डर था लोगों का कि जा पाएंगे कि नहीं, वो खत्म हुआ। पीपल नो आज अगर वो कभी भी चाहे गोवा जा सकते हैं 24/7। गोवा में फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंडिंग कर रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओपन हो रहा है। सो वर्ल्ड ओवर से फ्लाइट्स आर कमिंग, एंड दैट इज वेयर Goa suddenly became a very big choice for the tourist to for the investor to invest in Goa, having a very good return on investment, rental return on investment, good appreciation of projects. तो ये सब मिला के ना गोवा का एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ। But this is all about Goa. हम लोग क्या कर रहे हैं? Where are we coming up with? So we are coming up with our first maiden project north of Goa. This is going to be a 500-acre township. The slide says 300 acre. हमने 200 एकड़ और जमीन ले ली है, हमारी 500 एकड़ की टाउनशिप आ रही है। ये हमारा पहला मेडन प्रोजेक्ट रहेगा। दिस इज गोइंग टू बी अ 5-star gated township. Why do I say 5-star gated? Okay, to understand, so before I tell you 5-star, I tell you why a gated, because this is going to be a 3-tier security system that is going to be all around the township.
And now comes the question, why 5 star? 5 star, देखिए sir, before I tell you why, understand ये जो 5 star rating है, this is not the rating of my township or the quality of construction. We will come up with one of the best quality of construction, but this is not for the quality of construction. तो हम लोग 5 स्टार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है, ये 5 स्टार कहने का रीजन है कि मेरी पूरी टाउनशिप जो है ये एक 5 स्टार होटल के कंपैरिजन में आएगी। तो जो भी फीचर, फैसिलिटी, एमिनिटी आप एक 5 स्टार होटल में एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं, कंफर्म्ड है कि ये मिलेगा, वो सारी फीचर फैसिलिटी आपको मेरी टाउनशिप में मिलेगी। चाहे वो बटलर ऑन कॉल है, कॉन्सियर्ज डेस्क है, 24/7 F&B अवेलेबिलिटी है, लॉन्ड्री सर्विस, स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, बिजनेस रूम, कॉन्फ्रेंस सेंटर्स, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, नेम द फीचर, नेम द फैसिलिटी, वो सारी फीचर्स फैसिलिटी आपको मेरी टाउनशिप में मिलेगी। Along with that, I will also have 100 plus features and facilities coming up in my township. Okay, तो आपके जितने भी imaginations हैं of your features and facility, आपको सब मेरी टाउनशिप में मिलेगा। We are going to be Goa region का पहला 5 star gated township with a golf centric township. मैं गोवा की पहली गोल्फ सेंट्रिक टाउनशिप होगा। मेरा अपना 40 एकड़ का गोल्फ कोर्स होगा, 9 होल गोल्फ कोर्स, प्लेबल ऑन बोथ साइड्स। तो टेक्निकली 18 होल का एक गोल्फ कोर्स बन जाता है। From a horse riding center to jogging tracks, cycling tracks, forest trails, amphitheater, open bars, open restaurants, rock performance areas, name the feature facility, वो आपको मेरी टाउनशिप में मिलेगी। So with all of this being there, that's the reason one for my township being called a 5 star gated township. What is the second reason that I call it a 5 star gated township? The second reason for me to call my township a 5 star gated township is because मेरी पूरी 500 एकड़ की जो टाउनशिप है, ये अपकीप और मेंटेनेंस जो है वो एक 5 स्टार होटल करेगा। 20 एकर्स का इसका होटल आएगा, 5 स्टार रिजॉर्ट आएगा, जो मेरी पूरी 500 एकड़ की टाउनशिप को मेंटेन करेगा। अगर मैं एक छोटा सा कंपैरिजन दूं अबाउट दिस थिंग, सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू गुड़गांव एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू एम्बियंस मॉल, बट इफ यू गो टू द एम्बियंस मॉल यू विल रियलाइज कि एम्बियंस मॉल में कभी चले जाओ, सुबह, दोपहर, शाम, रात, विंटर, समर, स्प्रिंग, मॉनसून, गो एनी टाइम, एम्बियंस मॉल में आपको कभी भी सीपेज, पेंट खराब होता हुआ, प्लांट्स एंड ट्रीज ओवरग्रोन या टेढ़े तिरछे ग्रो करते हुए नहीं मिलेंगे, बिकॉज लीला मेंटेन्स दैट एंड दैट्स द लाइफस्टाइल यू गेट एट माय टाउनशिप। ओके, बट ऑल ऑफ दिस इज वेरी गुड। हाउएवर, अगर मेरी टाउनशिप कनेक्टेड ही नहीं हो पाती ढंग से, तो इस सब का कोई मायने नहीं होता। So this photograph that you see, the first picture that you're seeing on this slide, this is my actual township. This is the peak of my hill, and this road that you see that is coming from behind is the road that is also called the NH66, National Highway number 66, जो आपका साउथ पनवेल मुंबई से शुरू होके ऑल द वे टू कन्याकुमारी जाता है। This is an express speedway to connect Mumbai, Goa, Kochi, Kanyakumari. The average travel speed on this highway is going to be 110 kilometers an hour. So once the highway is complete and ready and delivered, traveling from Mumbai to Goa is going to be 5 hours. Okay, so I am right on that highway. मेरी साइड में और हाईवे में 175 मीटर का डिस्टेंस है. That is the NHAI's requirement for a safety zone on a high speed road. जहाँ पे ये safety zone का restriction खत्म होता है, वहां से मेरी township शुरू होती है. Okay, so with all these things is what we are coming up with. I kept talking about my golf course centric township. तो हम लोगों ने अपना जो पूरा contract है वो IDG International Design Group के साथ किया है. ये London based firm है, UK based firm है, जिसने वर्ल्ड ओवर ऑलरेडी 30 प्लस golf courses deliver किए हैं. They are the people who are designing our golf course. These are some of the articles that have been coming out for our project. So this is a very good slide which talks about what our ambition is, what are we wanting to do. So in next 3 years,
Yugen Infra is going to be a 10,000 करोड़ की कंपनी। अगले 3 साल में हम लोग अपना रेवेन्यू जो टॉप लाइन है उसको 3 साल में 10,000 करोड़ का हिट करने वाले हैं। और इसको हिट करने का मेरा सबसे बड़ा जो टूल है वो आप लोग हैं, माय चैनल्स, माय फ्रेंड्स। So you guys are the guys we are looking at hitting this 10,000 crore benchmarking. Some other this thing where we have been mentioned in the media, we recently got an award, Big FM award for the Big FM. So all of this has been happening. So yeah, so I have been talking about my golf-centric township, golf. बट क्या सिर्फ गोल्फ ही हमारी टाउनशिप में नहीं, हमारी टाउनशिप में दिस इज व्हाट ऑल यू विल बी गेटिंग। इट्स गोइंग टू बी अ गेटेड टाउनशिप लाइक आई टोल्ड यू। 3 tier सिक्योरिटी सिस्टम रहेगा, पूरी गेटेड टाउनशिप है, इन एंड आउट विल बी गार्डेड। हेलीपैड रहेगा अपना, 5 star रिजॉर्ट रहेगा, वर्ल्ड क्लास क्लब हाउस है। नॉर्मली क्या होता है किसी भी टाउनशिप की अगर हम बात करें तो 1 या 2 क्लब हाउस करके द टाउनशिप इज सोल्ड सेइंग वी हैव क्लब हाउस। In my township, you will get about 4 to 5 clubhouses. Swimming pools, banquet halls, restaurant, bar, name the feature, name the facility, 3 tier security, horse riding, amphitheater, jogging park, power backup, artificial lake, kids play area, senior citizen, water park. All of these features and facilities आपको मेरी township पे मिलेगी. Okay. Now let's look at where exactly we are coming up with. Okay. All this sounds very nice, but हम हैं कहाँ पे और हमारा exact location पड़ेगा क्या? Okay. So this complete area is starting with this river. ऐसे ये river ऊपर जाती है flow करके, ये पूरा जो एरिया आता है, this complete area is Goa territory. गोवा का ये पूरा लैंड मास है। ये जो ऊपर का एरिया आता है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द नॉर्थ गोवा। नॉर्थ गोवा इज द प्लेस जहाँ पे आपका मैक्सिमम टूरिस्ट फुटफॉल मिलता है, आपको टूरिस्ट एक्टिविटी मिलती है, बिकॉज नॉर्थ गोवा इज अ वेरी टूरिस्ट फ्रेंडली, वेरी टूरिस्ट कंफर्टेबल प्लेस। अगर हम बात करते हैं मेरी साइट के बारे में, तो मेरी साइट नॉर्थ ऑफ गोवा में आती है। This river is called Chapora River. Chapora River is also the river जहाँ पे आपका all the casinos are. So मेरी साइट से reaching any of these, Candolim, Kalingut, Bagha, 45 minutes to reach any of these. Mandovi River पे सारे casinos हैं जिनको अभी recently order किया गया है to be moved out, and all these casinos are moving out of Mandovi River. They are moving into a place which is called Dargal, जहाँ पे NH66, like I told you, from Mumbai to Kanyakumari, NH66 आपके चापोरा रिवर को क्रॉस करता है। इस लोकेशन का नाम है दारगल। दारगल इज द प्लेस जहाँ पे 1700 acre लैंड पार्सल हैज बीन डीमार्केटेड फॉर द अपकमिंग कैसीनो जोन। सो ये जो एरिया है, इधर आपका अपकमिंग कैसीनो जोन आएगा। इससे थोड़ा ऊपर हम लोग आते हैं तो ये आप एक ग्रीन पैच देख रहे हैं जहाँ पे गोवा क्रिकेट ग्राउंड के नाम से बनाया जा रहा है, जहाँ पे BCCI एंड गवर्नमेंट ऑफ गोवा दोनों कोलैबोरेशन में इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड बना रहे हैं, जो 32 एकड़ में बनेगा विद अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 45,000 पीपल। इससे थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो दिस इज द एलिवेटेड रोड व्हिच इज गोइंग टू कनेक्ट मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू NH66। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ऑल्सो नोन एज मोपा एयरपोर्ट इज द एयरपोर्ट जो DGCA द्वारा बनाया गया है। दिस इज द फर्स्ट एयरपोर्ट जिसमें आपको 4 रनवेज मिलेंगे इन गोवा। So this is going to be the main airport for Goa. The airport is being designed by GMR, and like you all would know, GMR is also fond of doing one more thing with the airport, which is creating the AeroCity. So this is where the complete AeroCity Goa is going to come up. Okay, इसका ये जो एरिया आता है, इस एरिया में ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल्स एंड IT कंपनीज ने अपने ऑफिस स्पेसेस एस्टैब्लिश करने शुरू कर दिए हैं ड्यू टू द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू गोवा। ओके, सो एयरपोर्ट के क्लोज प्रॉक्सिमिटी की वजह से यहाँ पे सारे आपके फार्मास्यूटिकल्स आ रहे हैं। तो अगर मैं एक सिंपल टर्म में बात करूं तो चापोरा रिवर से ऑल द वे टू मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मोपा एयरपोर्ट तक, इस एरिया का एक अगर मैं सर्कल बनाता
करता हूँ तो ये आपका एंटरटेनमेंट, वाटर वर्ल्ड, बिजनेस सेंटर एंड इकोनॉमिक जोन बनता जा रहा है. So this is becoming very critical and important for the area. इससे हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, about 15 minutes towards the Goa Maharashtra border. We reach this place called Patra Devi checkpost. Patra Devi checkpost is the place जहाँ से मेरी पूरी land parcel शुरू होता है. जब गोवा से महाराष्ट्र जाते हैं, you reach Patra Devi, stop your car, look onto your right side. When you look at your right side, एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखेगा आपको. ये जो पहाड़ है ये मेरी साइट है. This is where my site starts from. Phase 1 of my site starts from. 50 acres आपका गोवा का लैंड है. ये पीछे से पूरा लैंड स्ट्रेच होते हुए पालवन से वापस आता है. तो ये पूरा मेरा एरिया गोवा, ये पूरा एरिया गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर पे आ जाता है. बांधा पंचायत के टेरिटरी में आता है. एंड दिस इज वेयर माय कंप्लीट 450 acre लैंड पार्सल कम्स अप. Okay, if I talk about the current site, just give me saying is कि ये जो NH66 है और जो ये स्टेट हाईवे है 124 स्टेट हाईवे के ऊपर एक नया हाईवे बनाया जा रहा है जिसका नाम है शक्तिपीठ हाईवे. ये आपका नागपुर से सीधा बांधा को कनेक्ट करेगा. This again is going to be a high speed travel zone. So मेरे एक साइड में NH66 आएगा और दूसरे साइड में the new शक्तिपीठ is going to be there. This is the location जहाँ पे आपका पूरा मेरा 51 acre का phase 2 आया है. Okay, so this is my site layout. This is my site plan. Now talking about the layout for my site, this is what my site is going to like. Okay, this is the proposed Goa Nasik highway. दूसरे साइड मेरा NH66 आता है. ये जो पूरा ऑरेंज एरिया आप देख रहे हैं, this complete orange part, this is where my villas are going to come up. ये पूरा मेरा लेआउट है. ये ऑरेंज जो है ये पूरा आपके विलास आ रहे हैं. This is one club. This is the second club for my phase 2. This is a lazy river and this is where you will have the helipad. ये पूरा एरिया आपका वाटर वर्ल्ड के लिए बनाया जाएगा. वाटर वर्ल्ड बनाया जाएगा इधर. So this is the layout for my site. If I talk about my complete land parcel, this is what my complete land parcel looks like. This National Highway number 66, State Highway 124. ये जो पूरा ब्राउन लैंड है ये मेरा पूरा लैंड पार्सल है. और ये जो एरिया है, this is where my phase 1 is coming up. Okay. So this is the facade of my villas. इसमें से आप कोई भी फसाद को यूज कर सकते हैं. This is the more Goan style. This is the more contemporary style. जो भी आप यूज करना चाहें आप इसमें से कोई भी फसाद यूज कर सकते हैं. But you will only maintain these two facades. This is what we are suggesting as a villa, a double height drawing room, 1 bedroom on the ground floor, dining room, kitchen, powder room, and a swimming pool with 1 storeroom and 1 puja room for the ground floor. The second floor is going to be 2 bedrooms, a balcony, a terrace, and a family lounge. So this is what we are suggesting as a villa that will be comfortable for all of the clients to use. Okay. Any doubts, questions? भाई मुझे ना एक बार इसका जो साइट प्लान है फेज 2 का वो एक बार मुझे प्लीज वापस से ब्रीफ करोगे. उसमें एंट्री एग्जिट कैसे आएगी, I'll do फेज that. 1 से वो कैसे कनेक्ट होगा.
I'll just do that. So, Amit bhai, this is the proposed highway. जो भी स्टेट हाईवे 124 है, बांदा डोडा मार्ग रोड, this is where it is. Okay. Okay. हाईवे से मेरी साइड में अबाउट 2 से 3 एकड़ का लैंड पार्सल बाकी है, जिस पर हमारी बात ऑलरेडी चल रही है. We'll connect from there. You went to Kaveri with us, sir. Amit bhai, when we went, you were at the site. Yes. So Kaveri जाते हुए, there are these 2 big toll plazas that come up. जैसे हम महाराष्ट्र में क्रॉस करते हैं, दोनों साइड पे कमर्शियल व्हीकल के लिए टोल प्लाजा आता है. Right. उसके बाद रास्ता ऊपर चढ़ता है. जैसे ही वो रास्ता ऊपर चढ़ता है, उसके साइड से ये हाईवे, ये एक स्टेट रोड आता है. This road is already blacktopped and this is a complete road by the state government. Okay. This is What is the width? about 950 meters from the road. ये 12 मीटर का रोड है सर. तो ये जो और बीच में ये आप कैनाल दूसरा दिखा है रहे हो, जो this कावेरी के is some सामने से river एक or kind रोड of thing? ये जैसे हमारे साइड पे ओवरहेड कैनाल जा रहा है, वैसा कैनाल है ये. Okay. ठीक है. अभी हम इसकी अलॉटमेंट कर सकते हैं या अभी अलॉटमेंट नहीं कर सकते? And this is the second entry to my site, which is कर देंगे सर, अलॉटमेंट शुरू कर देंगे हम. अच्छा. ओके. So total number of plots कितने हैं आप इसमें, कितने निकले? Total number of plots जो मेरे पास है, that's about 400 plots. However, 400 plots में से मेरे almost 170-180 plots villas and senior citizen living के लिए देंगे. So what do you mean by senior citizen living? तो वो प्लॉट मेरा नहीं villas. बेचोगे आप? क्या थॉट है इसका? सर वो प्लॉट बहुत अलग बिकेंगे, वो ओनली फॉर स्पेसिफिक एज ग्रुप को बेचा जाएगा. मैंने उनकी वो अभी हम नहीं बेचेंगे. अगर कोई आज मेरे को उस एज ग्रुप में मिलता है तो हम लोग नहीं, बेचेंगे. वो भी हम नहीं बेच रहे. अभी नहीं बेच रहे. नहीं, वी आर नॉट सेलिंग देम राइट नाउ. ओके. ठीक है. अजय जी, इसमें आपने जो पहले इनिशियल मैप दिखाया था, उसमें एक रेक्टेंगल करके स्पेस था जिसको आपने एक्वायर नहीं दिखाया हुआ था. इज इट द सेम वाटर बॉडी यू आर रेफरिंग टू? यस. दिस वन? यस. ये जो है राइट. हाँ जी. यस, इस पे भी ऑलरेडी वर्किंग चल रही है. वी आर वर्किंग टुवर्ड्स एक्वायरिंग दिस लैंड आल्सो. तो ये आपके मैप में कहाँ शो हो रहा है? ये जो आएगा, ये आपके अराउंड इधर आएगा, इस साइड आएगा. सर कर्सर नहीं दिख रहा है आपका, नीचे घूम रहा. अच्छा, नीचे है. ओके. ये जो आप रोड देख रहे हैं, रोड हाँ. से नीचे इस एरिया में ये आपका आएगा वाटर बॉडी, मतलब अदर्स लैंड. अच्छा, ठीक है. ओके. राइट. तो ये मैप कहाँ पे ओवरलैप कर रहा है जो आपने एक्वायर्ड लैंड है ऑलरेडी? बिकॉज आई थिंक दिस इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट ना, उसमें दिखा देंगे एक बार. दिस इज अ ये स्पेस. इधर आपका आ रहा है. और उसके नीचे मैप इज ओवरलाइन. ओके. ओके, ठीक है. ये एरिया सर. और ये जो प्रपोज हाईवे है उसके साइड में यहाँ जो पे मेरा proposed highway है आर्टिफिशियल लेक, हॉर्स राइडिंग. your voice is, I'm not able to, you're not audible actually. Freezed. This is the proposed highway. Better now? Yes. No, but like you're breaking up. अमित भाई थोड़ा सपोर्ट करोगे, बताओगे मैं ही हूँ या आप भी हैं? Yeah, there is some lag looks like, but we can hear him. Maybe This you is need the to give proposed some. highway. सिक. In fact, I would, Ajay, I would also request you to charge ये your आपका पूरा proposed highway आ रहा है. क्या कह रहे हो सुमित भाई? इनका 9% my चार्ज laptop रहेगा. I'm already charging my laptop. ओके, ठीक है.
डन। लैपटॉप पे No, I think he's so this 9% that you're seeing is the zoom zoom in. in. Zoom. Okay. Fine. Okay. I got it. This is the highway, proposed highway इधर आएगा, मेरी लैंड अभी इधर आ रही है, इधर मेरा वाटर वर्ल्ड का एरिया आ रहा है साइड पे, golf course मेरा. So this is my highway that is proposed. This is already in work in NH66. ये पूरा मेरा लैंड पार्सल आ रहा है. इस साइड आपका ये जो एरिया आ रहा है, दिस इज वेयर माय अभी प्लॉटिंग इज कमिंग अप. यहाँ पे मेरा सेकंड एक्सटेंशन आ रहा है लैंड का, और यहाँ पे मेरा 3-4 एकड़ की जो लैंड रह गई है वो है. ओके. Sorry, Ajay, in terms of the location between phase 1 and phase 2, phase 1 कहाँ पे है इस पे basically? दिस इज phase 1 अच्छा, जो अभी हम, अच्छा ठीक है. and this is phase 2. So as of right now, अगर हमने connectivity, since अभी आपका वहां से connectivity नहीं है, so as of right now, connectivity is through the NH66 only to phase 2. Right now at this very moment NH66 से ये जो गवर्नमेंट रोड है उसके थ्रू कनेक्टिविटी आ रही है. However, my complete township will be interconnected in the coming time. Okay. सो एट द एंड लाइक ये दो मेन हाईवे को ज्वाइंट हो जाएगा इसके साथ, राइट? Absolutely. ओके, कूल. Now talking about the price list for my site. This is what the pricing is for my township. I am launching at 29,990, 10 rupees short for 30,000 rupees, which makes my 350 square yard plot size at 1.04 CR. Okay, round off to 1.05 CR. इस पे आपको 5,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड का डिस्काउंट मिलता है, तो इफेक्टिवली 17,50,000 का डिस्काउंट है, तो आपका इफेक्टिव प्राइस 87,46,500 हो जाता है. तो अगर आप लोग डिस्काउंट ना देना चाहें, दिस इज अ पार्ट ऑफ कमीशन. Okay. Sounds good. इसमें आपके 3 पेमेंट प्लान्स आते हैं, 2020, 2020, 20% in then 6 months, 10 months, 14 months and on offer of position or 18 months. हर 4 महीने बाद आपका एक 20% की डिमांड रिक्वेस्ट आएगी. The second payment plan is 50, 25, 25. 50% आप मेरे को on 60 days में देते हैं, 25% आप मेरे को 9 months में देंगे, 25% on offer of position देंगे. इसमें जो पेड अप वैल्यू रहेगी, फर्स्ट 50%, देन लेटर ऑन 75%, उस पे आपको टिल ऑफर ऑफ पोजीशन 10% गारंटीड रेंटल अश्योर्ड रिटर्न मिलेगा. 90-10 पे आपका 90% 60 डेज में, 10% ऑन ऑफर ऑफ पोजीशन. इसमें भी आपको 12% का गारंटीड अश्योर्ड रेंटल मिलेगा. तो एक क्वेश्चन है अजय भाई मेरा यहाँ पर. सो टेक एन एग्जांपल कि कोई बंदा आपको डाउन पेमेंट 1 शॉट करता है और उसको एश्योर्ड रिटर्न नहीं चाहिए, ठीक है? सो हम इसको 2 साल का एडवांस माइनस करेंगे या कैसे करेंगे? सर इसमें हम अगर 90-10 पे जाता है तो उस पे उसको 14% का एनपीवी मिल जाता है. 14%? या और 14% फॉर 1 ईयर, राइट? अपफ्रंट 14% का डिस्काउंट कर देंगे सर. व्हाई ओनली 14%? बिकॉज 2 साल में तो ये 24% हो गया ना सर. 2 साल नहीं, 18 महीने है ना. 18 महीने हैं तो भी 12-18% हो गया. व्हाई 14%? Because we are working on 12 months, handing over in 12 to 14 months हम इसको हैंड ओवर कर देंगे. भाई ये आपका ऑन इंटरनल पेपर में कैलकुलेशन आपको है, 18 बट लिख के दे ये रहा हूँ, कस्टमर को हम जस्टिफिकेशन थोड़ी दे सकते हैं. सर एनपीवी दे रहे हैं ना, एनपीवी तो कम ही रहता है फ्रॉम द. आप एनपीवी कैलकुलेट करके दे रहे हो, राइट? हाँ, एनपीवी है ये. ओके. एंड 50-25-25 पे 7% का फर्स्ट 50% पे एनपीवी मिल जाएगा. नेक्स्ट 25% पेमेंट जो होगी उस पे आपका एनपीवी एट द टाइम ऑफ डिमांड लेटर दिया जाएगा, जो भी क्रिएट होगा उस टाइम.
right? हाँ जी भाई. Hanji, all right. Yes, yes. Over and above this charge, it's going to be DC development charge. That is going to be 2,000 rupees per square yard. PLC is going to be 1,000 to 3,000 rupees per square yard. Club charges 4 lakh rupe rahenge per for one family lifetime membership. And possession charges जो रहेंगे वो आपके रहेंगे 300 रुपए per square yard के at the time of possession. Any questions? So for 3,150 square feet, what are the lease size? For that, all these additional charges will be coming up to how much? Amanat, agar if I talk about all inclusive rate, so approximately 1,415 is where it will be for a 360 square yard. Oh, 1.04, 1.05. oh. Got it. So if अगर हम कोई campaign run कर रहे हैं तो we can run the campaign of 12% assured return, right? Absolutely, absolutely, absolutely. Okay. But वो स्टार लगा देना because 12% assured return 90-10 पे ही मिलेगा. हाँ हाँ, obviously. 2020 पे आके मांगेगा ना तो नहीं दे पाएंगे हम कुछ नहीं भी. नहीं, obviously ये तो basic understanding है. ठीक है. Right. Any other questions? Any other questions? Please. These assure returns until 18 months, right? Or Till offer of possession. okay. So इस पे एक इंसेंटिव स्कीम है, मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को बिकॉज वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी. सो हर इसमें अभी जो हमारा सितंबर में बाली कन्वेंशन है रीमैक्स का, एशिया पैसिफिक कन्वेंशन, विच इज़ ऑन 1st, 2nd, 3rd of September. और उससे पहले 31st को एक हमने इंडिया ब्रोकर ओनर्स के लिए अलग से एक और इवेंट प्लान करा है. तो दिस इज 31 से लेकर 3 तक का टाइम हो गया ये. सो ऑन एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ यूजन इंफ्रा वी हैव डिस्कस विद यूजन ग्रुप, तो उन्होंने हमें ये कन्वेंशन ऑफर करा है. सो हर ट्रांजैक्शन पे हमें बाली ट्रिप मिलेगी, राइट? उसके अंदर टिकट एंड होटल स्टे इंक्लूसिव रहेगा. सो थैंक्स टू अजय एंड थैंक्स टू श्रीश्राम जी, हु इज द ओनर ऑफ यूजन इंफ्रा. सो उन्होंने हमें ये ऑफरिंग करी है ऑन एवरी ट्रांजैक्शन. दिस इज एक्सक्लूसिव ओनली फॉर रीमैक्स, राइट? नो अदर चैनल और कोई भी किसी को भी ऑफर नहीं है. Absolutely, and I want to have a lot of people from, and I expect to see a lot of people from you all in that event, Bali. 100%, yes. So any other question, please? Because अब इसका लेआउट आ गया है, सो आई बिलीव अब हमें इमीडिएटली हमें एक्शन में आना पड़ेगा बिकॉज यूनिट अलॉटमेंट शुरू हो गए हैं. सो वी कैन स्टार्ट इमीडिएटली. So, just a quick question on the PLCs, Ajay. Like, do we have like a list? Ke kaun se, like when you say 1,000 to 3,000, it's a huge bandwidth. So last time, like what we faced is के client would say, अच्छा ये वाला अच्छा इसका नहीं, इसका PLC इतना है, वो उसका. So do we have a list of already के भी ये जो rows हैं या these number of plots from this number to this number will have a PLC of this? Like how do we know prior All to? right, so give me today's time, Gagan sir. By tomorrow, you will have the list of each plot, which plot has what PLCs with them. Okay, so you will have a list. Right, perfect. Because that makes it so much easy. Because वो calculation बहुत बड़ी हो जाती है ना, 1,000 2,000 per square foot का rate ही बहुत different हो जाता है. So if we know it in advance, it's not per square feet; it's per square yard. Sorry, I know. Sorry. Per square yard, Gagan sir, not feet. Yes. I know. That's what I meant. So but वो clarity पहले चाहिए rather than calling you कि भी ये plot है और फिर आप कहो कि नहीं सर इसकी PLC तो 3,000. Yeah, I understand. So I'm working on that with my team to get the PLC chart ready.
Once the chart is complete, then we'll send you also the details. Done. Thank Okay. you. Sounds good. Yeah, so I have a couple of questions. Yeah, we are starting on this project for first time, and there we were there and we visited the site also. But many of my team members might not be aware exactly about Goa. So if we have to pitch this project to a random online lead, right? Can you please provide a script or something so how to we can create that impression so that we can bring them to meeting with you or webinar or site visit, whatever it is next year. Sounds good, Amarnath sir. Amit sir, you do have the script. Do you have the script? Not exactly, because हम तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं, स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती. Yeah. I mean, if I'll say, somebody visited forward Goa to and you liking Goa, that's a different story. But if we have to do नहीं Ajay bhai, first time, please create us. Actually, we have bullet pointers, right, for this Yeah. township. So I'll share that bullet pointers. And इसका मतलब I need a small favor from Ajay bhai कि एक ना 20 सेकंड 30 सेकंड की एक bullet pitch, right, which is like first 20 second क्या exactly Right. बात करी जाए. So if you can give us, that will be a great help. I'll do that. I'll send it to you. I'll send that. I'll share the key pointers of the township, which we already Right. have. I'll share that. Okay. yeah, that's one thing. And once we pitch to them, and after that, what we need to share, what we should not to share to them, so that there is still some content which you guys will be able to talk about. So that also we need to know. Fine. I'll share you this thing what all we are sharing with our client, so that the client also gets enough information that he can come onto a call and be aware of what we are talking about. Yeah. So I'll send that to you also. Yeah. So third question is, I know everything went fine, everything is doing good, but still you might not be able to answer few questions to customer and deal might not happen. So do you face such kind of questions which you are not able to answer with any client? Not really, Amarnath sir. That is not happening because when we are talking to the clients, generally the questions that the client has, we have already done our background search on that. So whether it is what's coming up in Goa, whether it is when is it going to come up in Goa, whether it is what are other developers coming up with, what are they offering. So I have my team doing the complete background research on this. We are doing day in and day out. We are going through all the news articles, news clippings, print media, whatever it is about Goa. And based on that, we talk with our client. So till now, comfortably, I can say that none of my team member has been caught off guard by any of the questions as such. In case there is anything that you have come up with, please do let us know. We would be more than happy to see where we can also learn from that. Sure. So recent past, we got some 3 to 4 leads just from our existing client referrals when we are just circulating your creatives on our social channels. And most of them were looking for immediate rental benefit because now Goa, most of them are investing just for rental benefits only. So if we have to talk about this property for immediate rental benefit, like I know there are 2 payment plans. In that case, you're giving rental benefit. So how can we pitch if somebody want to go CLP plan and to ignore about rental benefit? So when you're talking to the client and he says, I want immediate rental, be very clear with them that, sir, I have 2 plans in which the immediate rental will be there. First and foremost thing is, this is not a commercial project. This is a residential project. So there are no residential projects in which you get a assured return. The developer here is giving it, Yugen is giving it as an extra for the client. So because of which there are 2 plans on which we are giving assured return, not all plans. Now, if you're looking for a assured return, you can opt for the 50, 25, 25 or 90, 10 down payment. But if you're looking for something where you are comfortable in paying over a period of time and also looking at how and what the development's happening, that's also available in a super flexi where you get 20, 20, 20, 20 payment. And as the work keeps progressing, you also keep seeing how things are working up. Okay. So it is up to the client to choose. Either he wants money or he wants to be comfortable in knowing how much work is done before he makes a payment. And can customer go for loan for this project, or he have to arrange always from his pocket?
Absolutely, absolutely. So SBI is ready to do loans for us. However, right now they are only waiting for our RERA. Phase 2, we are getting RERA. Like I showed you, over 100 plus plots are where we are developing villas. So we will be coming up with RERA. My RERA should be in next 2.5 weeks or maybe 3 weeks time. The minute my RERA comes through, I will be forwarding it to SBI, and SBI will start funding for all the projects, all the phases of my project. And mostly what target audience, like which location from India or any other place, what kind of target audience are coming See, to I'll tell close? you very frankly, North India is selling like anything. Uh, whether it is Gurgaon, Noida, Chandigarh, they are selling like anything. However, Hyderabad, see, all these metropolitan, the money in the pocket is good. They have good value in their pocket. At the same time, if they are looking for something in their hometowns or in their city, it's not available in this price bracket. So that's why they are looking at other options where they can invest and earn out of it also. Okay. One last question. Like obviously we pitch and maybe there is an online meeting with you. And if customers want to visit the project, like what kind of support you will be providing? Are you providing cab or something to pick up and drop to airport or nearest place in the Goa? Perfect. So if a customer wants to visit my site or does not visit my site, I give him a 25,000 rupee discount on his overall billing. So technically his flight tickets, his stay in Goa for one night becomes my expense. Okay. As far as pickup and drop is concerned, Ajay bhai, I have one query because last time it was कि जिसका EOI fail हो जाएगा वो visit करेगा and then will reimburse that amount or we will deduct from the next payment. ठीक है, अगर वो EOI cancel हो जाएगा तो वो उसको pay करना पड़ेगा. yeah, ऐसा था पहले. right. That's still there. See, that's what I said. We give you a discount. तो आप उसको में से reimbursement ले लो. The only time you will get that money is when you have done a booking and you're moving ahead with that booking. If you decide to cancel the booking, then I'm not paying you anything for that. I'm not giving you anything for that. So that is your family trip. That's your family expense. If you're going ahead with a booking with me, then you get this discounting or the money amount in your account. Okay. And as far as pickup and drop is concerned from in Goa, from airport pickup and drop to the airport, that I can still get that done. Anywhere else in Goa will not be entertained. No Mapusa, no Panjim, no Donapara, nothing. The client comes from wherever in India or internationally, lands at Mopa. We pick him up at Mopa, we drop him back to Mopa. That's the maximum we can do. Got it. Yeah, I think lead registration process, everything we are aware. So I will just check with you later just to No problem. avoid time saving. Right. Anyone else? Hi Ajay ji, this is Praveen. I am new joinee at Remax. Welcome to Remax, Praveen sir. And you've Thank already you. Thank decided to He's an enjoy old time Goa. in real estate. He's a developer in Hyderabad. Oh, wow. Thank you. Thank you for your time to explain all this. So it's a very good presentation. So my question is around the persona, right? I think Amarnath already asked a few questions around the persona. So lately, I know a lot of people who are investing in Goa mainly for the rental purpose. So they are going for already built-in apartments or the hotel kind of thing, so that people who comes to vacation they can give it to for rental, right? Right. So I think so. This particular property or this particular venture, will that fit that kind of people persona? Is it only for the second home purpose, right? I mean, the villas which are going to be built in that, like if I buy a villa, if a client
purchases a plot there, let's say 1,000 square yard, can he build a villa and can he give it for rental there for long? Is it for that purpose as well? To set the right expectations to the client. So I just want to Absolutely, sir. understand. Yeah. See, when we talk of a second home, when we are talking about a second home or we are talking about a second income, this is obviously given fact that it will only see a second home is not going to be a house that is occupied by the family round the year. It will be empty. And if it's empty, why not put it out on rent? It's not about Goa. It's even if I have a house in Hyderabad and I stay in Gurgaon, I will put my Hyderabad house on rent. When and if I go, I will see. But at least my house gets maintained and is earning me something. Same thing is going to be here also. Okay, so yes, you are permitted to put your houses on rent. Airbnb villas on rent will be working with you. In case any of your clients says, no, I don't want to get into the mess of handling a villa. Is there someone who can do that for me? Absolutely. My 5-star hotel is going to take the villa on rent from your customer and put it on rent as their property. Whenever the customer is traveling, he informs them, they put that villa off the market till the customer is there. Once he's out, they will put it back on the market and they'll start using it and do a profit sharing with the customer, 70, 40, 60, 30, whatever is going to be the terms of contract. So that is available. Okay, got it. I have another thought on this because as GMR is going to develop the Aerocity next to Mopa, right? So Aerocity is like is a place जहाँ पर बहुत सारा employment generate होगा, and whosoever is working in that Aerocity, they are not going to back like 15, 20 or 30 kilometers from that place to Goa to reside, right? They will look some place to live in the nearby area. And this township is just, I believe, 10-minute, 15-minute drive from Mopa Airport. So in a longer run, this Aerocity will be a great thing for our township to increase the price and the rental as well. Absolutely, absolutely true, Amit sir. अजय भाई फेज 1 का रेरा नंबर आ गया आप लोगों के पास? सर फेज 1 पे रेरा नहीं लिया जा रहा because like you have seen the gadget where it says 8 or less constructed sellable units don't need RERA. Secondly, if you're plotting, you only need NA, no RERA needed. That's the gadgeting by the Maharashtra government. So we don't have RERA for phase 1. For phase 2, intentionally, we are creating 100 plus villas so that we get the RERA in there. Yeah. So this comes under Maharashtra registration, right? Or yes, Goa? It's Maharashtra, Maharera. We are legislatively part of Maharashtra. Okay. Yeah. So the pricing which you shown, that is just for the plot, correct? Not the construction. I'm sorry? The pricing which you have shown earlier, that is just for the plot, not for the construction. Absolutely. This is only plots. These are only plots. Construction is going to be 4,500 rupees per square feet. Okay. And which will be all inclusive with all movable furnitures, white goods and everything. A completely fully done up villa will be given to you at that cost. And can a customer buy a plot and just leave it like that, or he should go for construction, and that too with only Yugen Infra? Yes, the plot once the possession has been given, after that the customer in 2 years will have to start the construction on the plot. Otherwise, there will be penalties that he will have to pay. Okay. And construction he can do on his own, or he should go via? He can do it on his own. If he wants, we will do it for him. Understood. The facade will remain same, which is often discussed. Now, whatever the restrictions they have to follow, but construction they can. Yes. So those the orange areas like 140 villas or something, right? I thought so that particular area or those plots, Yugen is going to build the villas and sell it, right? Other the white Absolutely. areas or the plots. Absolutely. So, okay. Even Okay. So the for people, plot as well, if any client want to do the construction through Yugen, so they'll be more than happy to assist that. They will charge 4,500 per square feet on build-up area, and that will be a full furnished villa. You need to go only with the baggage.
Rest everything will be in the part of villa construction cost. For any plot except the Any senior plot. city, for any plot it's same. Yes. Within 2 years they need to start, otherwise there will be penalties. Absolutely, sir. See, it's a very simple reason why we do that is because if the clients leave the plot vacant, there'll be no footfall in the township. And if there's no footfall, the price will not escalate for the township. So they lose money. So to make sure that my client money grows and my channels grow with that, I will have to put a little stringent rule saying that you will have to develop a villa 2 years from the possession. Absolutely. Yeah, show the development, grow the. Yeah. Yeah. So, and what is the cancellation rules? Like if somebody paid initial 20% or something to book it, and then a legal verification or some other reason is not, what is the genuine reason they have to cancel it? So see, if someone wants to cancel after paying 20%, there will be a clause that will be in the BBA. So we will have to look into that. What the legal team gives us a clause. There will be a retention. General retention is about 25% of the paid total value that you have to pay up. Now, we are not looking at putting these kind of stringent norms. So we will sit with the legal team and try and get the best that can be done. However, to deter people from booking now and going ahead and canceling later, because I lose money in both situations. If the Yes. client is canceling later on, I will lose money to the client that I'm going to cancel the unit for. Also, the next purchase, I will have to hold the time and the expense on all of that. So there will be money lost there also. So there will be a penalty clause that will be there, and we will be charging a penalty. However, if a client is booking now on an EOI and cancels before doing the complete booking, once my RERA is in and I'd go for a proper booking, before that he says, no, I don't want to continue this. In that situation, we will not be charging anything. We will refund the complete money to the client in 48 hours. And in current situation, if they have to book, how much should be the payment minimum? 10 lakh rupees. 10 lakh EOI, bankable 10. check. Oh, fine. So right now we are only taking a 10 lakh bankable check for all bookings. Once we get the RERA in is where we will be raising the next demand as per the payment plan that you have selected. Got it. Also, one more question, Ajay, regarding if somebody buys a plot in this, do we still follow the same rule where post 50% of the payment, he is eligible to sell out at whatever profit? Absolutely. 50% and 6 months. Once he's done 50% and 6 months, he can sell the plot. And does he need to pay any transfer fee on that? No, first transfer will be free. Okay. Even it's Only not for from Remax. family. Okay. Please sell my plot at 29,000 and get some benefit out of it. How many you booked, Amit? One for myself. And the largest one? Smallest one. Okay. Good. Yeah, this actually helps us a lot, this webinar. And Amit, let's work together, find out how to start. Yes, yes. So thank you, Ajay bhai. I believe the most questions has already answered. In case we have any question, we'll definitely connect you. Thank you so much for this wonderful session. Thank you so much, everyone. Thank you for your time. Thank you, Amit bhai, Thank you, bhai. for Thank you so connecting much. again. And Bye. we'll be waiting for more sales happening now. Yes, even Ajay bhai, we are planning one small event in Bangalore, which we already discussed with Srisham ji as well. Okay. So very soon, before let's be ready with some prospects in Bangalore, and then we can plan this event. Sounds good, sir. Sounds Yeah. good. Absolutely. Yeah. All Thank right. you. Bye. Okay. Thank you. Take care. Bye. Thank you. Bye. Bye.